हेलो एवरीवन। आज के एडिटोरियल का टाइटल ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन है एंड दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 2nd of May 2020। ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन, ओमिनस ओमेन से बना है एंड ओमेन्स आर सच फीलिंग्स विच कम व्हेन समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। ठीक है, कभी कुछ गलत होने वाला हो और उसका आभास हो तो उस वक्त की जो फीलिंग होती है, जो सिग्नल्स होते हैं, जो इंडिकेशंस होते हैं, उनको अंग्रेज़ी में ओमेन कहा जाता है। उसी से ये एडजेक्टिव बना है ओमिनस। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ओमिनस है। कॉन्ट्रैक्शन ऐसा है जिससे ऐसा लग रहा है कि आगे और बुरा होने वाला है, हेंस ओमिनस कॉन्ट्रैक्शन। स्टीपेस्ट फॉल इन कोर सेक्टर आउटपुट इज at least 8 years portends protracted economic pain। ठीक है, कोर सेक्टर आउटपुट में पिछले 8 साल में स्टीपेस्ट फॉल हुआ है, सबसे गहरी छलांग लगाई है और नीचे गिरा है। whatever the readings or indicators of the growth or output of production of core sector हैं, उनमें बहुत ही steep fall हुआ है in the last 8 years, since the last 8 years, and it portends protracted economic pain. If something portends, it also is very similar to being ominous, and it also signifies something bad that is about to happen. Protracted is something that is being considered into play for a very long time, that exists for a very long time, often beyond what is expected is protracted. कोई चीज़ हद से भी ज़्यादा समय तक बरकरार रह जाए, that is protracted. तो इकोनॉमिक पेन जो है, इकोनॉमिक तकलीफ़ें जो हैं वो बहुत ही बढ़ने वाली हैं, ऐसा सिग्नल मिल रहा है from the steepest fall in core sector output in at least 8 years. The latest data on core sector output is signaling that considerable economic pain lies ahead in the wake of the COVID-19 pandemic and the nationwide lockdown that commenced on March 25th. Before going any further, core sector को समझ लेते हैं. What does core sector mean? ठीक है, core sector comprises of core industries. Now, core industries can be defined as main or key industries of the economy. In most countries, these particular industries are backbone of all other industries. In India, there are 8 core sectors comprising of coal, crude oil, natural gas, petroleum refinery products, cement, electricity, steel and fertilizer. तो ये 8 इंडस्ट्रीज़ हैं which comprise the core sector in India. So let's get back to the article. The latest data on core sector output is signaling that considerable economic pain lies ahead in the wake of the COVID-19 pandemic and the nationwide lockdown that started or was brought into action on March 25. The provisional figures released by the Commerce Ministry show that production at all but one of the 8 industries comprising the core sector shrank in March for a year earlier, resulting in the sharpest contraction in the index since the new series began in April 2012. ठीक है, तो 2012 में जब से ये नया सीरीज शुरू हुआ था, न्यू बेस ईयर ऑफ कैलकुलेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोर सेक्टर शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक 8 साल हो गए हैं. एंड दीज 8 years, this year in March has seen the steepest fall in the production by these industries. So the provisional figures released by the Commerce Ministry show that production at all but one of the 8 industries comprising the core sector shrank in March from a year earlier. पिछले साल से इस साल सिर्फ एक इंडस्ट्री है, उसको छोड़कर बाकी के 7 इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ही शार्प फॉल देखा है, resulting in the sharpest contraction in the index since the new series began in April 2012. Index कहने का मतलब है यहाँ पे index is a list. So the list of 8 industries, out of which 7 showed a very sharp fall, a very sharp contraction, except just one industry. We'll read about that industry in the coming paragraphs. That output contracted by as much as 6.5% in a month when most economic activities ground to a halt only in the last 7 days is a worrying augury. Now, augury is another synonym for ominous or portends. ठीक है, augury again means feelings that something bad is about to happen.
So all these three words are similar, they are synonyms but usually used in different contexts. Synonyms है इसका मतलब उसका similar meaning है, same नहीं. तो similar meaning है तो they can be used differently in different contexts. लिखा हुआ है that output contracted by as much as 6.5% in a month when most economic activities ground to a halt or become so less that they almost stop only in the last 7 days is a worrying augury. ठीक है, 6.5% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है सिर्फ एक महीने में इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो दैट इज अ थिंग टू वरी अबाउट, दैट इज अ वरिंग ऑगरी. While output at petroleum refineries slid only by a marginal 0.5% as a bulk of the transportation sector was idled only in the last week of March, the 7.2% and 13% contraction in electricity and steel production respectively reflect the underlying stress in the economy, most crucially on the demand side. अब आगे के पैराग्राफ्स में मैंने जितने भी ये कोर इंडस्ट्रीज का मेंशन करते हैं उनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है एंड ऑल दोज वोकैब वर्ड्स आर बीन हाईलाइटेड इन येलो. सो देयर आर 3 industries that we can see mentioned in this paragraph in this slide: petroleum, electricity and steel. तो 8 में से 3 तो यहाँ mention हो गए. लिखा हुआ है while output at petroleum refineries slid only by a marginal 0.5% as bulk of the transportation sector was idled मतलब उनको रोक के रखा गया था. They were kept in standing. Only in the last week of March, the 7.2% and 13% contraction in electricity and steel production respectively reflect the underlying stress in the economy. इकोनॉमी में जो कुछ भी स्ट्रेस बिल्कुल अंदर से पनप रहा है उसके इंडिकेटर्स कौन थे? इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ और स्टील का ग्रोथ. बोथ ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.2% एंड 13%. ठीक है, नेगेटिव ग्रोथ हुआ है इनमें. देयर हैज़ बीन अ फॉल इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील बाय 7.2% एंड 13%. Correspondingly, there has been a fall in production of electricity and steel, क्योंकि जितना डिमांड होगा उतना ही तो प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, सो पेट्रोलियम सो ओनली 0.5% डिक्रीज बिकॉज मार्च के एंड में लॉकडाउन शुरू हुआ था. बाकी के समय में ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था तो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स वर इन डिमांड. बट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील प्रोडक्शन वेर डाउन throughout the month by 7.2% and 13% respectively. And they reflect the underlying stress in the economy, most crucially on the demand side. Demand ही नहीं है तो फिर प्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? With all non-essential industries and commercial establishments ordered shut as part of the lockdown, demand for electricity declined by more than 9% in March, according to data from the National Load Dispatch Center. ठीक है, नॉन एसेंशियल इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ बंद थे लॉकडाउन में, जिसकी वजह से डिमांड घट गया. ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. While the power sector has been exempt from the lockdown because of its essential nature, the slump in demand from commercial customers is bound to have a significant sector-wide cascading impact as a result of heightened cash flow problems at the already stressed distribution companies that deliver electricity over the last mile to consumers. लंबा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के समझते हैं. While the power sector has been exempt from the lockdown, ठीक है, पावर सेक्टर को लॉकडाउन से एग्जेम्प्ट करके रखा गया था. इट वॉज केप्ट एज एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ इट्स एसेंशियल नेचर. द स्लम्प इन डिमांड, स्लम्प इज अगेन सडनली स्लिप करके गिर जाना, दैट इज स्लम्प, है ना. तो सडन फॉल इन समथिंग इज स्लम्प. स्लम्प इन डिमांड फ्रॉम कमर्शियल कस्टमर्स is bound to have a significant sector-wide cascading impact. ठीक है, अब sector-wide cascading impact कैसे होगा? First of all, what is cascading impact? Cascade होता क्या है? Waterfall is called a cascade. Waterfall कैसा? जो कि बहुत अलग अलग grades में गिरता है. बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल है, पहले किसी एक पत्थर से टकराया, फिर उसके नीचे दूसरे पत्थर से टकराया, फिर उसके नीचे तीसरे पत्थर से टकराया. It forms a wave-like pattern when it is falling. That is called a cascade. तो अगर पहला इफेक्ट हो उसकी वजह से दूसरा इफेक्ट हो, उसकी वजह से उसके बाद तीसरा इफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड ए कैस्केडिंग इम्पैक्ट. ठीक है, और ये कैस्केडिंग इम्पैक्ट कैसा होगा? ये सेक्टर वाइड होगा. ठीक है, ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को, पूरे पावर सेक्टर को अफेक्ट करेगा.
So that is why it has been written. It is bound to have a significant sector-wide cascading impact as a result of heightened cash flow problems at the already stressed distribution companies. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में बात हो रही है जिनके लिए उदय स्कीम शुरू किया गया था. ठीक है, डिस्कॉम्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज relate to the Uday scheme by the government, where the debt problem of these discoms was to be mitigated. However, it has not been that successful, but still there is some relief to these companies. So these are the companies which are actually responsible for delivering electricity to the last mile consumer. आपके घर पे जो बिजली आती है, it is through these power distribution companies. तो आगे जाके क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होने वाला है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम होने वाला है, सो इट विल हैव इवन लार्जर एंड सेक्टर वाइड कैस्केडिंग इम्पैक्ट. So 3 industries were discussed here. Coal, the only sector to post a positive figure in March as output expanded 4%, also presents a far from reassuring picture as growth slowed sharply from February's 11.2% and was less than half the 9.1% pace seen in March 2019. So that one sector out of 8 that we read showed positive growth, and the rest 7 showed negative growth. That one sector is coal. That one industry is coal. Coal showed a 4% growth. ठीक है, उसके आउटपुट में, उसके प्रोडक्शन में 4% का ग्रोथ देखा गया. बट इवन दैट इज़ अ वेरी डिसमल पिक्चर, दैट इज़ नॉट अ वेरी रीअश्योरिंग पिक्चर. वो भी बहुत ही फीका सा फिगर है, क्योंकि फेब्रवरी में इट वॉज 11.2%. द अमाउंट ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, द ग्रोथ इन द अमाउंट ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड or the output of coal was 11.2%. And in March 2019, पिछले साल मार्च में it was 9.1%. So now it is 4%, not even half of that. So although positive, but not even, still it is very dismal. And with demand for coal from user sectors spanning thermal generators and the key process industries of steel and cement unlikely to revive anytime soon, production of the crucial commodity is very likely to shrink in April. Coal की ही बात हो रही है. Coal is a very key component in steel industry, in cement industry and in thermal generators. ठीक है, तो if the demand of coal from user sectors spanning thermal generators and such, spanning का मतलब हो गया the extent of something, the extent of use of, or the extent of coal being as an input of how many industries. So it spans from thermal generators to cement, as in the statement we can see. ठीक है, तो from और to भी लिख सकते थे, उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर दिया हमने, स्पैनिंग, स्पैन. ठीक है, so thermal generators, वहाँ पे जहाँ पे पावर प्रोड्यूस होता है, और ऑल दोज थर्मल पावर जनरेटर्स जहाँ पे कोल से बिजली बनाई जाती है. So thermal generators and the key process industries of steel and cement unlikely to revive anytime soon. अभी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत कम है, तो पावर जनरेटर, जो थर्मल पावर जनरेटर्स है, वहाँ पे कोल का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि उनको प्रोड्यूस कम करना पड़ेगा. स्टील का डिमांड कम है, तो भाई स्टील में भी जो कोल का इनपुट लगता है दैट विल बी रिड्यूस्ड. सीमेंट में भी जो कोल का इनपुट लगता है दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. ठीक है, सो क्योंकि अब इनका जो डिमांड है दैट इज़ नॉट गोइंग टू रिवाइव एनी टाइम सून, अभी कुछ नियर फ्यूचर में तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. सो प्रोडक्शन ऑफ द क्रूशियल कमोडिटी दैट इज कोल इज़ वेरी लाइकली टू श्रिंक इन अप्रैल ऑल्सो. With the construction sector hit hard by the lockdown and likely to face serious labor supply issues even after the economy gradually reopens, cement may see production shrink in the first month of the new fiscal year by an even greater extent than the 25% drop seen in March. तो सीमेंट इंडस्ट्री में जो ड्रॉप हुआ है दैट इज़ 25%. प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ गॉन डाउन बाय 25% इन मार्च. ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज गोइंग टू बी हिट हार्ड बाय द लॉकडाउन. देयर हैज़ बीन अ मैसिव एक्सोडस ऑफ लेबर्स फ्रॉम द अर्बन सेंटर्स बैक टू देयर विलेजेस, and even if the economy reopens, even if the lockdowns are lifted, still there will be a likely shortage of labor and hence reduced or suppressed construction activity,
and even in the first month of the new fiscal year, which is April, even in April there will be seen a considerable fall in the or shrink in the production of cement, because there won't be much demand. The mayhem in the oil market with global crude prices tumbling is also certain to undermine the industries in the energy sector. ठीक है, mayhem is basically हाहाकार. So oil market, crude oil market में, global crude oil के price में जो हाहाकार छाया है, that mayhem of prices tumbling or falling down is also certain to undermine or to make weak the industries or weaken the industries in the energy sector. ठीक है, तो इस पेज पे हमने कोल, सीमेंट, ऑयल मार्केट्स, इनके बारे में बात की. Undoubtedly, April's overall core output appears headed for an even sharper contraction, and with the 8 major industries having a weight of 40.3% in the broader index of industrial production, it is certain to drag industrial output as a whole into negative territory. ठीक है, one thing is to be noticed is इसमें दो इंडस्ट्रीज को के बारे में बात हुई नहीं. एक है फर्टिलाइजर्स और दूसरा है नेचुरल गैस. ठीक है, तो हमने जो 8 पढ़ा, द 8 कोर इंडस्ट्रीज, आउट ऑफ विच 6 हैव बीन डिस्कस्ड. 6 इंडस्ट्रीज ट्रेंड ऑफ आउटपुट हैज बीन डिस्कस्ड है. अदरवाइज नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर की बात नहीं हुई. Undoubtedly, April's overall core sector output appears headed for an even sharper contraction. ठीक है, मार्च में इतना contraction दिख गया है, अप्रैल में और ज़्यादा होने वाला है, because nothing has resumed. All economic activity is still at the same standstill that it was in March end. And with the 8 major industries having a weight of 40.3% in the broader IIP, अब IIP is Index of Industrial Production, जिसमें कि आप बाकी के सारे इंडस्ट्रीज़ का भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं. ठीक है, दैट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयर प्रोडक्शन इज IIP. उसमें 40.3% वेटेज जो है वो इन 8 मेजर इंडस्ट्रीज का है. तो अगर इनमें कोई नेगेटिव फिगर्स आते हैं तो ऑब्वियसली द एवरेज ऑफ द एंटायर IIP विल फॉल. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन, इट इज सर्टेन टू ड्रैग इंडस्ट्रियल आउटपुट एज अ होल इनटू नेगेटिव टेरिटरी. The center may be left with little option but to massively lift public spending on infrastructure once the lockdown eases in order to revive the reeling economy. Reeling economy is such an economy that is having very suppressed economic activity, जो कि बहुत धीरे धीरे चल रहा है या फिर बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है. That is reeling economy. Reeling means something that is moving with in a staggered way, है ना. कोई पिया हुआ होता है, अल्कोहल के इफेक्ट्स में होता है, how he walks staggered, लड़खड़ा के चलना, that is reeling. So an economy that is moving in a very staggered manner, that is not very certain of whether it will grow, whether it will decline, and is moving with a very much uncertainty, is a reeling economy. So center will have very few options but to massively lift public spending. Public spending को बढ़ाना होगा on infrastructure if you want the economy to revive from the reeling conditions that it currently is in. So this is what today's article was about. It talks about the growth or the recent decline or shrinkage in the core sectors of the Indian economy and how it can affect the entire IIP, how it can have effects on the rest of the industries, and what needs to be done to revive the economy from the effects of this shrinkage. So I hope you understood most of it. Some basic concepts about core industry I hope are clear now. So this is what this is about. Thank you so much. Have a good day. Please stay safe. Take care of yourself and your elders and parents at your home. Have a good day. This is me signing off for today.